नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज का थीम बहुत सिंपल है, दैट इज मल्टी डेकेड हाई इन्फ्लेशन एंड हाउ एंड हु कंट्रोल्स इट। सो अगर आपने गेस किया हो तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेंट्रल बैंक टुडे एंड टुडेज थीम इज गोइंग टू बी ऑन ईसीबी। सो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ईसीबी, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक फॉर द यूरोजोन। अभी इसके दो प्राइमरी फंक्शंस है। वन इज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल इन द यूरोजोन. Second is the safety and the supervision of the banking system in general. So, what does the ECB do? Yeah, how do they achieve whatever was mentioned above? That is maintaining, keeping the inflation in check, supervising the financial services. So, first function is to ensure price stability. That is to keep the inflation in check. अब ये इन्फ्लेशन अगर चेक में रखना है, they have to set interest rates for the eurozone, right? Because interest rate is the best way to make sure that there is sufficient money supply, the sufficient money supply, and to control the excess money supply in the economy, and then manage the foreign currency reserves that they have. Now the next function comes in, that is they have to supervise the financial institutions and the financial markets. Now they also have to manage the amount of reserves that the banking system has so that they can actually arrest or help the economy by either removing excess money from the system or by pushing in money whenever it is required. नाउ जैसे कि हम सभी को पता है कि ये महीने के 21st को ईसीबी की मीटिंग है एंड ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. सो अगर आपको पता होगा कि ईसीबी जो है वो हर 6 वीक्स में दे कंडक्ट अ मीटिंग, दे रिव्यू व्हाट हैज हैपेंड एंड देन दे कम आउट विद अ मॉनेटरी पॉलिसी. सो वही जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हम लोग 21st को देखेंगे. नाउ करंट कंडीशन क्या है? नाउ अभी आपको पता होगा कि मार्केट में देर आर टू थिंग्स दैट आर मेजरली अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज. One is the geopolitical tensions, the ongoing war between Russia and Ukraine. Second is China's zero COVID policy and the mass testing policy that leads to lockdowns in China. So अभी इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाकर देखते हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन की जब भी हम लोग बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज द रशिया यूक्रेन वॉर. अभी रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से देर इज बीन अ डिवाइड अमंग द कंट्रीज, देर इज अ डिवाइड इन द वर्ल्ड इन जनरल अगर आप देखो तो. So there are a few countries that are actually supporting Ukraine, and then there are the others. So Europe जो है that happens to be standing alongside Ukraine. तो अभी उसके वजह से क्या हुआ है? And because Russia has done many things in Ukraine in general to destroy the Ukrainian economy and has harassed the Ukrainian people in many ways, the world in general is actually boycotting Russian oil. नाउ अगर आपको पता होगा कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, सॉरी, रशिया एंड यूरोप के बीच में, यूरोजोन के बीच में देर इज अ ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल. मतलब यूरोजोन का जो भी मेजर एनर्जी है, दैट इज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, कम्स फ्रॉम रशिया. नाउ एवर सिंस दिस रशिया यूक्रेन वॉर हैज हैपेंड, multiple reasons है. जैसे there are ethical issues, then there are multiple sanctions that have been laid on Russia's energy, because of which जो free transport है वो नहीं हो पा रहा है. So कहीं ना कहीं there is a shortage that is felt in Europe. अभी रशिया also is a very big exporter of fertilizer. Now अभी अगर आपको पता होगा कि एनर्जी और फर्टिलाइजर जो है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बेस है, बिकॉज एनर्जी इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को वो चेक में, आई मीन कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी इज नेसेसरी. क्रूड ऑयल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए फॉर मल्टीपल रीजंस. वैसे ही फर्टिलाइजर इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अगर इसका ही अगर शॉर्टेज होगा, देन देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन रशिया, द यूरोजोन राइट नाउ. Then there is hindrance in the free mobility of goods. Now, uh, Russian oil जो है that was carried across the world using European ships. Now European ships no longer accept Russian consignments, and कहीं पे भी अगर
if there is a transport of goods and all going, तो कहीं ना कहीं there are hindrances that have been created because of this geopolitical tension. So जो free mobility of goods था वो कहीं ना कहीं hinder हो रहा है, one way or the other way it is getting hindered. So that is another problem that has been created by this geopolitical tension. Now let us look at the second problem, that is the effect of China lockdown. अगर आपको पता होगा तो चाइना जो है ये पॉइंट पर दे आर फॉलोइंग अ जीरो कोविड पॉलिसी, as in they don't tolerate even a single covid case, so they continuously go for mass testing. And China, if you know, is one of the biggest producers. I mean, anything and whatever you use comes from China. उसका कुछ ना कुछ कुछ एक component होता है जो चाइना से आता ही है. So, अभी क्या हो रहा था कि there is a bilateral trade agreement between Europe and China. So, because if China goes under lockdown, if their industrial activities halt, that trade agreement, I mean the trade that happens between Europe and China, that also comes to a halt, or there is some bottlenecks or reduction in the bandwidth. That creates supply side problems. अभी कोविड के बाद, immediately after COVID, you might have heard प्रोसेसर्स के माइक्रो प्रोसेसर्स के शॉर्टेजेस थे, सिलिकॉन का शॉर्टेज था. All these things happen, I mean, were one of the side effects of China lockdowns, and ये कहीं ना कहीं आज भी हमें दिखाई दे रहा है. Not in the same products, not in the same commodities, but in different products, different commodities. But this thing still prevails. So इसके वजह से क्या हुआ है? Now, आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दो चार्ट दिखाई देंगे. One is the German ZEW. Now that is nothing but an economic sentiment indicator. एंड अगर आप ये चार्ट गौर से देखो तो बाय आई थिंक द मिड ऑफ May 21 ये पीक आउट हो गया एंड इट हैज बीन डाउन एवर सिंस. मतलब द ग्रोथ या जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो कम हो गया इन यूरोजोन. नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द अदर चार्ट. नाउ दैट इज द सीपीआई. सीपीआई सिंपल टर्म्स में इन्फ्लेशन. Inflation since November 2021, yeah, sorry, 2020, yeah, early 2021, ever since then it has skyrocketed. And अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो it is very close to the 9 level, 8.6 to be precise, but 9 के पास आया है. Multi-decade high inflation, at the same time lower confidence in the economy, yeah, reduction in the industrial production. These things lead to stagflation. इसे economics में इसे stagflation कहते हैं. That is higher inflation, lower growth. This is called stagflation. This is the situation in eurozone right now. So अभी सेंट्रल बैंक के पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? Obviously, first thing would be to contain the multi-decade high inflation. अभी अगर वो करना है, they have to raise rates. Rates अगर उन लोग को रेस करना है, along with that they have to do some quantitative tightening. Now quantitative tightening क्या है? Quantitative tightening is nothing but making sure that you're sucking out money from the economy whenever needed. So in times like these you don't want people to go out and spend. बराबर ऐसे टाइम पर अगर ज्यादा स्पेंडिंग होगी, the demand for goods and services is going to increase. And when there is an inflation in the economy, that is the last thing that you would want to have. So ऐसे टाइम पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के जो स्टेप्स लिए जाते हैं, they are also very crucial. And the last expectation is the outlook change, as in how well the ECB accepts the reality, or they hide away from the reality. उन लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में आ जाए, या उन लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेंगे, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंट्रोल इट. ये स्टांस जो है ये पॉइंट पर, आर दे गोइंग फॉर एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव हॉकिश स्टांस, और दे आर मेंटेनिंग दैट डविश स्टांस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. नाउ we'll come to the quantitative tightening part. Now, one of the most important quantitative tightening tool that the ECB has come out with, this is the anti-fragmentation tool. Now, let us first understand what is anti-fragmentation. So, आप अगर bond yields track करते हो, तो आपने देखा होगा कि यूरोप में कई सारे ऐसे डेट रिडन इकोनॉमीज है जिसके बॉन्ड yields have skyrocketed. So that simply means that इसके bonds में selling massive है. So यूरोजोन ने क्या किया, आई मीन ईसीबी ने क्या किया, they have decided to intervene in the bond market. Now, simply
put in terms of demand and supply. अगर all of a sudden there is a massive selling in the bond yields, and अगर आपको उसके rising sorry, there is a sudden selling in the bonds and the bond yields are skyrocketing, and अगर आपको उसका up move halt करना है, then you have to be a buyer in the bond market. ठीक है. Now ECB has planned to do the same thing. अभी now the next question comes is how do we finance it? अगर इसे फाइनेंस करना है, व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज टू सेल द लो वैल्यू एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. अभी कोई भी बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी लोअर. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बेसिकली सेलिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बॉन्ड्स, लाइक से जर्मनी के बॉन्ड्स उन लोग ये पॉइंट पर बेच रहे हैं, एंड देन दे आर टेकिंग दैट मनी टू बाय बॉन्ड्स ऑफ हाई डेट इकोनॉमीज लाइक इटली एंड ऑल दोस इकोनॉमीज. सो उससे क्या होगा कि इन अ वे they are able to arrest the rising bond yields. To put it in short, uh, they are getting uh, hit massively. ठीक है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हिट आ रहा है दैट इज ओनली इन हाई डेट इकोनॉमीज लाइक से इटली. तो उन लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इंस्टेड ऑफ ओनली इटली टेकिंग द बीटिंग, आई ट्राई टू स्प्रेड इट आउट. सो इटली इन जनरल पर द प्रेशर इज स्लाइटली लेसर. I mean, it's slightly lesser, and say stronger economy like Germany, which can actually take that sort of beating, they are also getting a small piece of the cake. That is anti-fragmentation tool. Now, what the ECB does with respect to anti-fragmentation tool is also very important in the 21st ECB meeting that we are going to see. Now, the policy path and impact on Euro USD. अभी पॉलिसी का जो भी आउटलुक आएगा, that is immediately going to have an effect on the euro USD, because euro is the currency for I mean currency that is directly affected by ECB's policy. So यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो we have made a bifurcation here. So the things that might actually end up being taken into consideration as dovish, and the things that will be considered as hawkish. So a 25 basis point hike, it might sound hawkish at first, but this is already being priced in. अगर आपका इन्फ्लेशन डेकेड हाई पर चल रहा है, एंड अगर आप सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर रहे हो इन्फ्लेशन द इंटरेस्ट रेट्स, देन इट एंड दिस इज ऑलरेडी बीन प्राइस्ड इन, बिकॉज इसके इसके बारे में डिस्कशंस हुए हैं दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011 इन द मंथ ऑफ जुलाई. Yes, that is right. So that means the market has already priced in कि इतना तो होना ही है. But as compared to the current inflation scenario, अगर सिर्फ 25 basis point hike करते हैं when the Fed is actually going ahead doing 75 basis points, and there are also expectations of 100 basis point increase by the Fed. But उसके सामने the ECB does a 25 basis point, that means it is going to sound dovish. At the same time, अगर उन लोग बोलते हैं कि आने वाले मीटिंग में भी, दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर भी, आई एम जस्ट प्लानिंग टू डू अनदर 25 basis point hike, दैट मीन्स दे आर जस्ट बीइंग dovish about it. देन आप इन्फ्लेशन टारगेट्स दे रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि वी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू फॉल टुवर्ड्स द टारगेट लेवल्स, दैट ऑल्सो अगेन इज गोइंग टू बी dovish. Then they see downside risk in the economy, and then anti-fragmentation tools अगर बहुत ज़्यादा है and limited conditionality है, then that also is going to act as dovish. And agar in general there is a dovish tone, the euro USD is going to come crashing down. Similarly, agar instead of doing a 25 basis point rise, they go for a 50 basis point hike, and then in the month of September they say कि the inflation is at decade high. Let me go ahead do a 50 to 75 basis point hike for the month of September. And उन लोग बोलते हैं कि yes, medium term में inflation is going to remain elevated. We have accepted the fact, and it is going to remain elevated. And we will continuously, keep taking steps to make sure that we try to contain the inflation. Now, the next thing that we'll see is what is the technical view for Euro USD. So, अभी के recent webinar में I had mentioned that understanding the sentiment, fundamental, and technicals all are equally important. So now let us take a look at the Euro USD chart. So यहाँ पर जो मैंने दिखाया, that's a downward sloping channel. एंड अगर आप देख सकते हो ऑन द अपसाइड इसने काफी अच्छे से रेजिस्टेंस लिया है. सिमिलरली ऑन द डाउनसाइड भी उसने काफी अच्छे से सपोर्ट लिया. जहां पर उसने पैरिटी ब्रेक की, जो माइल्ड ब्रीच था, दैट वाज आल्सो ऑन द ट्रेंड लाइन
ऑन द लोअर ट्रेंड लाइन। सो वहां से आपने देखा कि काफी पिछले 3 सेशन में काफी अच्छी बाउंस आई है। नाउ इफ ईसीबी साउंड्स हॉकिश एंड जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे ही अगर वो परफॉर्म करे, there is a possibility that the euro, so if the ECB acts as the market is expecting, there is a possibility that the euro USD pair can actually move higher towards this 1.04 zone. So अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो एक मल्टीपल टच पॉइंट लेवल भी है एंड सिमिलरली जो अपर ट्रेंड लाइन है जो ये चैनल का वो भी वहीं पर कोइंसाइड हो रहा है. So the 1.04 zone would be the crucial level to watch for. Now that we've seen euro USD, let us take a look at the euro INR pair. So इसमें भी हम लोग को सिमिलर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर भी लोअर ट्रेंड लाइन से वो बाउंस कर रहा है. यहाँ पर 8330 से लेके 83 तक का जो एक रेजिस्टेंस जोन है, दैट विल बी द क्रूशियल लेवल टू वॉच. सो दैट वाज आवर टेक ऑन what the ECB, what to expect from the ECB, what the market in general is expecting, and how the market is going to react to various actions by the ECB. I hope you people have enjoyed this video. Do subscribe to our Telegram channel and continuously stay updated about what is happening in the FX world. And also, do subscribe to our YouTube channel. Press on the bell icon so that you get updated every time there is a new video that is up. Thank you.